I hope you are doing awesome right there. All right, as well as I think you have accomplished the 3 consecutive examination, that is which is none other than English language paper 1, paper 2, as well as the history and civics, and the question which we have discussed, and the question also, it was a direct question from that. All right, anyway, ignore those all. So as I have I have updated the last 2 videos regarding the blueprints of the mathematics, as well as the important topics, important question which you should not skip. If you have not watched, do watch it out. As well as in today's video, I will be talking about arithmetic progression. Why I have taken out this chapter as a first, right? See children, actually, from this particular chapter, arithmetic progression, all right, AP 6 number mark चमकने वाले हैं. You will be getting 6 marks, 5 to 6 marks. That means one is guarantee 4 marker question you will be getting from the section C. एक 4 मार्क का चमकने वाला है, और एक मार्क का चमकेगा, नहीं तो 2 मार्क का एक चमकेगा. दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए. अगर वो वाला क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं आया तो सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन बी में नहीं आएगा तो सेक्शन सी में तो मैंडेटरी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स. इग्नोर दैट, डू नॉट इग्नोर दैट. And this video is specially for the student, those who have not started their preparation, those who are thinking they will be keeping 20-25. अगर तुम ये सोच रहे हो बच्चों कि आज 20 से 25 तुम लाओगे, you are not good in maths, do not think that. All right, because in the childhood also I was not good in maths, but after that the rest is history. But remember one thing, take it out all the scareness, right? Do watch the video and everything you can understand pretty well. And yes, before starting this video, I won't say anything in details, although there is having not time to understand in details. I will be saying everything in short. That doesn't mean I will be doing everything in short. Everything you can understand pretty well, right? So let's the lecture of PYQs of arithmetic progression begins, as well as the important questions of AP, the direct questions from AP, as well as the questions. ये 4-5 क्वेश्चन वो नहीं है, और भी आने वाले हैं. Don't worry regarding it. And the most important, this type of question you will be getting in the exam. Yes children, this type of question you will be getting in exam. You can understand pretty well after 5 to 10 minutes. So as you know very well regarding the AP, first terms is all about A, as well as A2 is all about, let me have a basic concept. 5 होता है A1, 8 होता है A2, 11 होता है A3, right? You can take it out a common difference very well. You know the first term. These are the things you know. Coming to the direct to the point, direct to the formula. Why children? Because we don't have much time to understand in details. As you know very well, in case of AP, we know that A plus n minus 1d, that is having a formula. कितना फॉर्मूला होता है? जनरली 3 to 4 formulas there are. 4 फॉर्मूलास होते हैं एपी का. 4 फॉर्मूला, एक हो ये वाला होता है, दूसरा क्या होता है? L equals to A plus n minus 1d. C, L stands for last term. ऐसे इसमें से क्वेश्चन चमकेगा, इसमें से क्वेश्चन चमकेगा. कैसे चमकेगा? I will be saying you later on. Another formula in case of SN. In case of SN थोड़ा बाद में कर लेंगे. The first 2 formulas you have to understand this. Is it clear? First 2 formulas is very important, and you have to be little bit tricky to do this all. And definitely within 20 minutes you can complete AP. Within 20 minutes. That doesn't mean after this video you will be going and watching some of the movies, social media, Instagram chatting. ना वो सब नहीं. If you want to focus on AP, complete this. Then after you have to do some of the questions which I will be letting you know from the Consent Selina or else from the APC ML Agarwal. Remember, you can ignore this as well as, but you cannot ignore your textbook. Your textbook is Bible, right? As I said in my last 2 videos I have said the same. No ignorance in the history civics also, you know very well. बच्चे जो तुम्हारे बड़े भैया बड़े दीदी, the brother and sister, those who have appeared exam, all right, you can ask them, right? In case of CBSE 70%, though I am a CBSE teacher, in case of CBSE 70% question come from book. 60 भी हो सकता, but in case of ICSE 95% comes from book only. Book, I repeat, book. Consent Selina, APC ML Agarwal. Let us understand this, right? Even from this only you can be able to do many things. For an example, let me say that, and after this very thing, अगर मैं अभी यहाँ पर बात करूँ 15 टर्म 15 टर्म्स, राइट?
देर आर हैविंग टू फॉर्मुलाज एप इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एक होता है एल इक्वल टू ए प्लस होल एन माइनस वन डी. देर आर हैविंग टू फॉर्मुलाज, बट इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स दोज हु आर कीपिंग 70%, those are keeping 60%, this lecture is for you all, and the toppers those are keeping 90-95%, they can score or they can you increase, you know, increase the speed. Okay, ये सब देखने कोई जरूरत नहीं है. All right, so if you want you can skip it also, do not worry about that. And if you cannot see this, kindly do make it a quality clear. You can take it, you can do it 360p or 480p, right? चलो, मैनी क्वेश्चंस, मैनी स्टूडेंट्स. ओके, अगर 15 टर्म आ जाता तो उनमें पता नहीं चलता. अगर 15 टर्म आता तुम्हें ऐसे करना a plus 14d, right? I am saying in a short form, if there is having 8 term, you have to do a plus 7d. Why we have to do? I cannot say this anything now because there is having no time. क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब नहीं. अगर तुम्हें 50 टर्म मिला, सपोज फॉर एग्जाम्पल 50th टर्म, what you gonna do? You have to do a plus 49d. These things you have clear. These things you have clear. Let us stick to the very first questions. चलो, एक दो क्वेश्चन लगाऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा, एपी क्लियर हो जाएगा. देखो ये बकवास नहीं, सच्चा है, सच्ची बात है. एनीवे, लेट अस स्टार्ट विद एन एपी. सी, फॉर एन एग्जांपल, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली कम्स इन एग्जाम. ऐसे क्वेश्चन चमकेगा. दिस इज जनरली, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट यू नो, इट विल नॉट कम लाइक 4 मार्क क्वेश्चन, बट इट विल बी अ क्वेश्चन विल बी कमिंग लाइक 2 मार्क क्वेश्चन. 2 मार्क तो जनरली आएगा भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अगर 4 मार्क आएगा तो 2 मार्क वाला नहीं आएगा. अगर 4 मार्क में 1 मार्क ये वाला आ सकता है, ये वाला नहीं आएगा 1 मार्क, आई डोंट थिंक. बट 4 marker just to understand. SC, find epi, right? What is an epi? Let us understand. As I said, epi is in a sequence. Sequence क्या होता है? 1 3 5 7 ... 49. For an example 49. This is known as A, you know very well. This is known as D, you know very well. This is known as L, you know very well, right? If I will be talking about to find the nth term, अगर मैं बोलूं यहाँ पे nth term निकालो, अगर मैं बोलूं यहाँ पर nth टर्म निकाल पाओगे? यस माय ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. हाउ? बिकॉज एज आई सेड बिफोर द फॉर्मूला दैट L इक्वल्स टू n प्लस n माइनस 1d. A इक्वल्स टू, A इज गिवन व्हाट? 1 दिया है. 1 d कैसे निकालते हैं? यू नो बेटर. a2 minus a1, 3 minus 1 is all about 2 plus n minus 1 d 2, right? Then after 1 plus 2n माइनस 2, बात खत्म. L कितना है? 49 दिया गया. 49, बात खत्म. 49 इक्वल टू यहाँ पर कितना हुआ? -1 48 आंसर निकला 14 24. सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग 24 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट मीन्स द nth टर्म इज 24. इज इट क्लियर? nth टर्म इज 24 तुम्हें आंसर मिल गया. ऐसे ही कुछ इन दिस वे यू हैव टू डू इट, राइट? एंड दिस वर द क्वेश्चन चमकेगा 1 मार्क का. ऐसे नहीं, लिटिल बिट मोर ट्रिकियर. द आईसीएसई इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, नॉर योर बेस्ट फ्रेंड, is even if no neither mine. So these are the questions will be coming and little bit tricky will be coming. I will be talking ahead. All right, so number 1 question, look at the number 1 question briefly, that in an AP whose second term is 12. बात सुनो बच्चों, सेकंड टर्म इज 12. लिटिल बिट बिफोर आई हैव सेड, अरे यार अगर सर बोले थे, याद रखो, अगर सर बोले थे सेकंड टर्म मतलब a प्लस डी, सेकंड टर्म a प्लस डी, अगर थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी. बच्चों a प्लस डी, बात खत्म. a plus d is 12, इसका मतलब equals to. Always remember this is, if, and this will help you in case of problems of quadratic equation. Generally प्रॉब्लम में ही तुम्हें स्टेटमेंट बनाना है. प्रॉब्लम में से स्टेटमेंट तुम कैसे बनाओगे, आई विल बी लेटिंग यू डू आफ्टर 2 to 3 वीडियोस. दैट मीन्स टुडे ओनली यू विल बी एबल टू डू. टुडे और टुडे आज ही करेंगे. चलो, हुज सेकंड टर्म इज 8, इसका मतलब इक्वल्स टू सेकंड टर्म इज 12, बात खत्म. सेवेंथ टर्म अगेन चिल्ड्रन, सेवेंथ टर्म अगेन सेवेंथ टर्म, दैट मीन्स a प्लस 60, बात खत्म. अच्छा, एक्सीड का मतलब क्या होता है? एक्सीड डिफरेंस और एक्सीड का मतलब माइनस. याद रखो अपने जीवन काल में, व्हेन एवर बी गिविंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द फ्यूचर और व्हेन एवर बी गिविंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम, एक्सीड का मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस. छोटे छोटे बच्चे जब तुम थे, मम्मी पापा समझा रहे होंगे, अरे अगर टोटल देगा तो प्लस, सम देगा तो प्लस, डिफरेंस देगा तो माइनस, प्रोडक्ट देगा तो इनटू, बाय देगा तो डिवाइडेड बाय. इज इट क्लियर? एक्सीड माइनस फोर्थ टर्म अगेन a plus 3d. See how I am doing. In the same way you have to do, and the most important, you don't need to do any process because this time only MCQ A B C D, बात खत्म, right? Fourth term is 15. Fourth term दिया बेटा 15.
बात खत्म, आई बात समझ में? लेट्स डू a plus do 12 a. Now what you gonna do? That means I have to do this is, let us take is equation 1. All right, see can I calculate this? Yes, a cancel हो जाएगा, a मर गया. Then after it is all about what 3d equals to 15, d equals to कितना हुआ बच्चा 5. Is it clear? d we have got 5. अच्छा, we got d 5, but can we take it out a? Can we take it out a? Yes, we can take it out a. How I will be taking out a? I will be taking out, अगर ये 5 ना यहाँ पर अगर मैं डाल दूं, d की जगह डाल दूं, let me keep 5 in case of d, so I will be getting a plus 5 equals to 12, a equals to 7. Answer we have got a equals to 7. Am I right? a equals to 7. ap क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म a होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है a. That means let me write it down 7. Is it clear? Another is what? a d is a2 minus a1, a2 plus a1 करके मैं d निकाल सकता हूँ, d is all of 5. इसको मैं प्लस कर दूं 12 मिल जाएगा. इसके बाद में 12 बचा 16 17 17, 70 plus 22 डॉट 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 बात फाइंड कर p. The answer is 7 12 17 22 is the answer, dot 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 is the answer. Is it clear how to do? That means the moral of the story, my beautiful children, अगर तुम्हें कुछ नंबर देता है, अगर तुम्हें कुछ टर्म देता है, तो पहले तुम्हें क्या करना है, ट्रिक अप्लाई लगाना है. That means 17 term a plus 16d, 14 term a plus 13d. And this is the lecture for all my beautiful 70-60% स्टूडेंट्स. अरे 95% टॉप तो आएगा ही आएगा, उसके टॉपर बनाने में कोई मजा नहीं होता. जो 70% में जो टॉप बनता है ना, उसे मजा होता है, बिकॉज आई वॉज द सेम. Okay, do not so please cooperate, and I hope the concept is pretty clear to you, right? Coming to the number 2 questions, I hope this type of question चमकेगा भाई. Why I have taken it out? I am not a fool that I have taken out this type of questions. I have taken it out because this type of question will work for your examination. All right, I hope you have written everything. All right, number 2, let us start with the number 2. चलो अच्छा, अगर ऐसे नहीं आएगा तो नंबर चेंज हो सकता है, मतलब 2 की जगह 3 हो सकता है, 7 की जगह 5 हो सकता है, राइट? अर्ली मॉर्निंग. विच टर्म ऑफ एन एपी 3 10 17 विल बी 54 मोर देन 30 टर्म्स? आई बात समझो. विच टर्म ऑफ एन एपी 3 10 17, दैट मीन्स आई हैव गॉट a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 10, सॉरी d इक्वल्स टू 7, 10 minus 3d, d इक्वल्स टू 7. इज इट क्लियर? 17 विल बी 84 मोर देन 13 terms. See how to do. Which term of an AP a equals to 3, d equals to 7 will be 84 more than 13? Very easy, very easy. How? So an equals to a plus 12d में लिख सकता हूं. बताओ yes or no? an means AP equals to a plus 12d. 13 terms is, as I said before, 13 को मैं पहले 12d लिख सकता हूं. Yes. a is given 3, d is given 7. Can I put it down everything now? कितना होता है? 12 7 जा 784 plus 3 87. बात खत्म. Yes. अच्छा, what more? Will be 84 more than is this much. That means I have to do it a plus. No. Why? बाद में करते हैं. चलो, that means this much you understood. a plus 12d, that is 87. अच्छा, that means AP, this AP also I have to find it out. Find the AP. That means again I have to do here a plus n minus 1 d का वैल्यू will be, चलो यहाँ पर सर will be 84 ना, so let me write it down, will be 84, right? That means a minus 1 d. Why I have done? You might be thinking, sir, why आप यहाँ पर ये वाला क्यों लगा? I have take it out this because I have to take it out the term कैसे लाओगे अगर तुम एपी का फॉर्मूला नहीं लगाओगे? एपी का फॉर्मूला क्या आता है? a into n minus 1d, right? n minus 1 into d time. Is it clear? So I have to put it down. Then 3 value I have got 3 plus. Is it clear? Now what? n minus 1 I have to do n minus 1. Children, n minus 1, n का वैल्यू क्या, हमें तो टर्म निकालना है, तो n तो है ही नहीं, तो क्या करना है? n minus 1. d का वैल्यू क्या है बेटा? 7 इक्वल्स टू कितना? लेट मी ऐड 7 4 11 11 171. Then after what you have to do? 7n. 3 plus 7n minus 7 equals to 171. That implies that 7n यहाँ पर हो गया plus 4, यहाँ पर हो गया 175 if I am not wrong. Minus 4
-4 वहां पर 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, n हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 7, आंसर मिलेगा तुम्हें कितना मिलेगा 7, 7 दूना 14, 7 2 4 3 3 5 7 25, n मिला 25 है। ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 23, ऑप्शन 4 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स? ऑलराइट, सो लेट मी सी माय वीडियो इज वर्किंग ऑन, सॉरी, यस इट्स ऑल वर्किंग। चलो लेट अस स्टार्ट विद द नंबर 3 क्वेश्चंस, राइट? ऐसा क्वेश्चन चमकेगा माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन चमकेगा ही चमकेगा, देख के करना, ठीक है? All right, number 3 questions. If the session is really helpful to you, please say as soon as possible. Find the sum of all multiples of 7 lying between 300 के 700. बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं. Many students, I can say 90% students, toppers or tools also they used to do wrong. जो अपने आप को ज्यादा टॉपर मानते हैं वो भी गलती करते हैं. यहां पर बहुत गलती कैसे, चलो देखते हैं. Find the sum of the multiples 7 lying between, मतलब यहां पर ऐसा नंबर लेना है 300 से 700 के अंदर. From 300 to 700 we have to take any one number, any number we have to take so that the sum will be there. Any AP sequence we have to take. That means the number which can be divided by 7. क्या होता है 301. Now you might be thinking sir आपको कैसे पता? It is at 301 because yeah, how can I say that? You have to multiply. 300 से नहीं होगा, काटोगे नहीं होगा, 301 से हो जाएगा. All right. But now D, can I do 308? Yes. Dot 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 dot. Right. 700. बच्चे बहुत होते हैं, यहाँ पर 700 लिख देंगे. Sir, 700 can be divided by 7. We will be able to get 100. That is wrong. My students, that is wrong. Because you have to take it out the number from 300 to 700 अंदर का. 300 700 के अंदर का मामला है, तुम्हें अंदर का मामला निकालना है. 300 के 700 के अंदर. That doesn't mean 300 and 700 ही होगा. No, you have to exclude 300, you have to exclude 700, you have to take it out 3012 699. ऐसे में कुछ नंबर तुम्हें निकालना है. बच्चे यहां पर 700 करते हैं. That is wrong. My students, you should not do. You should not do this. If you are looking after this video, you should not do this type of things. कैसे करना है? यहां पर होगा 693 because you have to do 699 से नहीं कटेगा. 98, 97, 96, 95, 94 they won't get divided by 7. If they will get divided by 7, that is a 693. Now you have to put the formula. What is the formula? Come on, you have to say with me, all my beautiful children. That is A. Is all about a 301. D we have got, that is a 7. Now L I have got. I have to put the second formula which I have taught little bit earlier, that L equals to A plus n minus 1D. A is all about a 301 plus n minus 1. N is not given. We have to find n. N minus 1. D is all about given, which is all about 7. L it is given 693. 301 प्लस 7n माइनस 7. यहां पर कुछ इस प्रकार का होता है. कितना हुआ रे यहां पर? 394, 693 माइनस 294 इक्वल्स टू 7n. ऐसे क्वेश्चन अगर ना चमका तो 4 why I have taken it out? Because I have been doing with you because to make your concept clear. मैं डिफरेंट तरीका का सवाल लिया हूं so that you people can do it. And my beautiful students, after this video, please try by your heart to your exercise questions, because exercise question example से जो क्वेश्चन बनेगा वो कहीं से नहीं बनेगा. No reference, no sample paper, nothing. From where they have got sample paper? पैदा कहां से हुआ है? टेक्स्ट बुक से. हम कहां से पैदा हुए? मम्मी से. मम्मी, हु इज द मदर? टेक्स्ट बुक इज द मदर. टेक्स्ट बुक इज द मदर ऑफ अदर बुक्स. रिपीट, रिमेंबर माय कोट्स. टेक्स्ट बुक इज द मदर ऑफ अदर बुक्स. रिमेंबर, ओके? चलो, अपना नाम में एक शायरी भी हो गया, राइट? टेक्स्ट बुक इज द मदर ऑफ अदर बुक्स. ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर, टेक्स्ट बुक इज द बाइबल. टेक्स्ट बुक इज अ बाइबल. What textbook can give you, others cannot. I don't think others can. Reference guides वो कहाँ से पैदा हुआ? सब टेक्स्ट बुक से. Give a lots of importance to the textbook.
कंप्लीट द कॉन्सेंट सेलिना, कंप्लीट एपीसी एमएल अग्रवाल, 40 से 40 क्या कोई माइकल तुम्हारा नंबर नहीं काट पाएगा, रिमेंबर दिस। ऑल राइट, सो वी हैव टू कैंसिल दिस। कितना होगा कैंसिल करने से, चलो देखते हैं। राइट 9 बनेगा यहाँ पर, अगर 9 बनेगा 8 18, यहाँ पर फिर से 9 बनेगा, फिर से यहाँ पर। देन आफ्टर व्हाट आई गोना डू ओवर हियर दैट 5 3 399, इफ 399 डिवाइडेड बाय 7 हो, राइट 7 35 4 35 5 5, right 35 4 9 7 is the answer 57, n equals to 57. Now you might be thinking, sir, how you are doing very good soon? No problem, you can also do if you have a practice. N equals to 57. Acha, we have got n equals to 57, but we have to get the sum. We have to take out the sum. We have to take out the sum. Now the formula is, we have to, I have not said the formula. Do not worry, there are having two formula. Another formula also that is having Sn equals to n by 2 into a plus l. ये बच्चों को बहुत कम यूज करते हैं. My students, you never use this kind of formula. You only knew two formulas. What are they? 2 to 3 formulas. Basically तुम लगाते हो a plus n minus 1d, और एक लगाते हो Sn equals to n by 2 whole 2a plus n minus 1d. वो वाला लगाते हो basically, but you people don't put this type of formula. Where to put this type of formula? Where last number will be given, a will be given, n will be given. n मिल गया यहाँ पर, लास्ट नंबर है यहाँ पर, हमें सम निकालना है. कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सॉरी ऑल मल्टीपल्स. दैट मीन्स Sn equals to n by 2 whole a plus n. n is equal to 57 by 2. अच्छा, sum is given. अच्छा हाँ, 57 by 2 plus a. What is the a I have got? 301. 301. What is the l I have got? गलत हो गया. 693. Let us calculate 693. Right. So 57 by 2 times एक एक 4 4 4 9 9. Right. Getting. Let me have a multiply. 7 7 9 9 9 9 9 9 9 2 8 3 3 0 0 0 3 2 8 329 328 329 is the answer. Is it clear? Is it clear? That means 328 329 is the answer. I hope the concept is pretty clear to you. That means you have to ऐसे क्वेश्चन चमकेगा. क्वेश्चन कैसे चमकेगा देखो. ए वाला क्वेश्चन सपोज आ गया, क्या बोलेगा यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन विल बी सेइंग हियर दैट फाइंड n. पहले n निकालो, n का वैल्यू. उसके बाद बोलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट होगा निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला. देन आफ्टर फाइंड द वैल्यू. 3 बिट तो यहाँ पर हो गया, राइट. देन आफ्टर इफ दे विल बी सेइंग फाइंड द कॉन्सिक्वेंस, यू हैव टू फाइंड इट आउट. सो दिस आर द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट टू योर पीपल. चलो नंबर 4, लेट अस डू नंबर 4. वेयर इज माय डस्टर? या इट इज देयर. ऑलराइट, नंबर 4. Number 4 children, see in an epi, my dear most children, in an epi A is 25. एपी में क्या होता है ना, A है 25. रिमेंबर इन एन एपी A is 25. फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 25. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. nth टर्म इज -17. nth टर्म मतलब यहाँ पर L हो जाता है. nth टर्म मतलब दिस इज द nth टर्म. सपोज 5, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 5 8 8 9 10 11 11 डॉट 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 समथिंग दैट इज नॉन एज nth टर्म. That is something that is known as nth term, right? And nth term is -17. That means it is -17. यहाँ पर अगर ये यहाँ पर -17 हो रहा तो L हो जाएगा वो L equals to -17. अगर बच्चों इसीलिए तो ना I have taken out this type of problem because you people don't know this, because you people doesn't understand. Nth term is -17 my dear most nth term अगर क्वेश्चन में आ गया तो तुम बच्चे लोग गड़बड़ा दो. nth term is what I have done. No, that is nth term is known as last term. All right, nth term. Sum is given, very important. Now we can do everything. Right? Okay. So first what it is given, A equals to 25, L equals to कितना -17 तो D दिया है ना. n equals to -17. nth term which is known as L term. बच्चे बहुत सोचे और nth term मतलब it is n number of 10. That is improper, that is incorrect. Sum it is given Sn 132. So I can find it out n if I am not wrong. Yeah, I can find it out n. How I have to, n is equals to n by 2 into a plus l. Right?
I have to find it out. I can find it out n. I can find it out n, my dear most students. See, क्वेश्चन चमकेगा कैसे चमकेगा, ऐसे करके पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा वो. They will be asking you what? Now they will be asking the question. Suppose this type of question have come after this. They will be asking children, and definitely whatever the question I will be letting you do over here. और अगर उसमें से ना आया, अगर उसी टाइप का भी आएगा, अगर ये वाला तो आएगा. I cannot say something I have not made pre-board questions or board question, but this type of question will be coming confirm, and if not, this type will be coming. This type मतलब नंबर चेंज होगा, बात खत्म, नंबर चेंज होगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, right? And I am pretty sure. All right. Anyway, n/2 a plus l you have to do. a plus l और भी हम थोड़ा कठिन कर रहे हैं, वहां पे तो और भी इजी आएगा. Yeah, this is all about lengthy problems, but there will be coming very halka walka. Sn equals to n/2 a plus n l plus n. All right, so can I do Sn? What the sum it is given? Sum of the nth term is 132. इसका मतलब equals to, पहले से बोला था 132 into 2 equals to l a plus n. l 25 minus 17 कितना हो गया? 25 minus 17 25 minus 17 कितना? 3 1.8 8 and 8. So 132 into 2 by 8. 4 and 5 10 1 2 3 33 n. And we have got 33. बात खत्म. And we have got 33. Find n. यहाँ पर है रे. Find n and d निकालना है. d कैसे निकालोगे जल्दी बताओ. अरे फॉर्मूला पुट्टा करना है ना. a plus n minus 1d. आई बात समझ में क्या करते हो यार. a का वैल्यू निकालो. That means some Sn it is given. If not this formula, L भी तो दिया है ना. ये if not what? This formula L is given what? Now L is minus 17. It is visible everyone. Let me see. It is visible? No. Yeah, it is visible little bit. All right. Minus 17 equals to what? A it is given. What is the A? 25 plus n 33 32 times d. 32d कर देते minus 17. यहाँ minus 17 यहाँ पर आ जाएगा minus कितना होता है यहाँ पर 25. Here will be minus, again it will minus 25 45 52 minus 52 equals to 39 32d minus 52 by 32d which is all about कितना होता है 16 बन जाओ. 42 होगा यार. हम भी कमाल कर देते बीच में. 21 आंसर डी. मिला डी का आंसर मिल गया. इतना बात खत्म. सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम. अगर बच्चे बहुत होते हैं ना, अरे यार वी हैव गॉट द आंसर इन फ्रैक्शन, इट माइट हैव रॉन्ग और इट माइट बी रॉन्ग. बच्चे बहुत सोचते हैं, बट नो, यू हैव टू रिमेन स्टिक टू योर आंसर ऑलवेज. एंड ऑलवेज इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम, अगर जब तुम एमसीक्यू देते भी हो, पहले वाला जो तुम्हारा whatever you will be thinking first, that is the perfect answer. Always remember, because I also do the wrong. See what you know, first what we does, always we think a lot. अरे ये वाला होगा ना ये वाला ना ये वाला, then we do wrong. पहले जो आंसर आएगा ना सटकेगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा. चलो let us do number 5. Oh my god, number 5 is d plus a minus 60 30. Then after 15th term is given. Children, 15th term, that means if it's 15th term, a 15 equals to कितना होता है बच्चों? That is 1 twice. A 15th term is 1 less than of 8th term. That means here is saying that 15 वाला टर्म क्या होता है ना, 8वां टर्म से एक छोटा है. That means 1 is smaller than 8th term. Then definitely a plus 7d, and it is a twice of its 8th term. A plus 7d minus 1. आई बात समझ में. सो कैन आई डू a 15 टर्म लिख सकता हूँ a plus 14d. The same thing I can also do 2a plus 14d, which is all about a negative 1. Now it will be get a cancel. ये वाला cancel बन गया, right? Then after what? 2a plus a minus 2a. Minus a equals to minus 2a. Minus a equals to minus 1. Minus cancel, a equals to 1. Now I don't want to do. AP निकालना है, D निकाल के AP तुम अपने आप करोगे. Now you have to do by your own. I don't know anything. It's your homework. If you cannot do, you can comment me. I will make a shorts for you all people. Come on, let us see another question. Very important question. That where it is. That it is very important question, my beautiful children. And this is the type of question which you will be getting in the
सेमिस्टर 1, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेक्शन सी में निकलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग एपी, कंसिडर द फॉलोइंग एपी, पता चल गया है व्हाट इज द कंसिडर द फॉलोइंग एपी, a equals to -11, a equals to -11, right? If the image is not clear, please make your quality clear children, please. अच्छा, a equals to -11, d कितना होगा -7, d कितना होता है 8 to -a1, d is 8 to -a1, right? That means what? 8 is given -7, -7 minus 11, that means -7 plus 11 with जो हो गया 4, d मिल गया 4, common difference is 4, did you get it? Common difference 4. What is the number of terms? What is the number of terms of the AP? Number of term निकालना है, निकाल पाओगे? Yes, we can find it out. How we can find it out? Number of term, because 49 is given. 49 is given L. How? ना -11 -7 -3 dot 49. We have to put the formula again. L equals to A plus n minus 1 d. My beautiful children, L is given 49. A is given -11. Plus n we don't know, we have to take it out, n minus 1 d I have got, that is all about a 4, तो -11 plus 4n minus 4, यहाँ पर बन जाएगा 49, that implies that, करो 15 35 कितना हुआ -15, अगर यहाँ पर -15 बन जाता है तो यहाँ पर बन जाएगा कितना 15, that is all about -15 -39, right? 34 नहीं होगा ना, let me see, 4 is the answer, right? If the 4 is the answer, common difference 4n -4, and here is the, it is 11 -4 -15, यहाँ पर आता तो -15, यहाँ पर प्लस 15 हो जाएगा ना, सॉरी प्लस 15, 49 प्लस 15 59 64 बाय 4 equals to n, which is all about 15 16, 16 is given, yes 16 is given, AP is 16. Sum of the n term, again the sum is given, we have to find the sum. How can we find the sum, my beautiful children? Yes, you can find the sum by the help of last method, that is children, now you have to find the s, you sn, sum formula you can put it out, अपने आप खुद निकालोगे। 10th term निकालना है, 10th term कैसे होगा, a plus d, a plus 9d 10th term, right? 10th term a plus 90, a is value is given, what is the value of a, -11 plus no d 36, this is all about 25 is the answer, right? 25 is the answer, बात खत्म। Is it clear? Is it clear? I hope it is very clear. Another question, let us think the another question, I think it is the last questions, and please wear it to image, कहाँ चला गया, and it is the last question, hope we will share end the session as soon as possible. See, another question over here is another question, children, the sum of 4th term, see the sum of 4th term and 8th term of an AP is 24, sum of 4th term a plus 3d, sum of 4th term and 8th term a plus 7d is 24, कितना बन गया, a plus 10d 24, बात खत्म, 2a plus 10d, right? So 2 I have taken the 2 24, 2 मैं निकाल देता हूँ, a plus 5d इक्वल्स टू 12 में कर सकता हूँ ऐसे करके, 2 I have take it out common, okay, 2 I have take it out common, this 2 will go there, 24, right? I don't want to teach like a nursery student, you know very well. 6th term 10th term, तो फिर a plus 5d a plus 9d is 44, तो यहाँ कितना 2a plus 9 4 13 14, 14d equals to 44, so a plus 7d equals to 22, बात खत्म। Equation 1 equation 2, now we have to do ये वाला cancel हो गया, plus minus adding solving equation 1 and 2 we get, solving equation 1 and 2 we get, 7d का minus हो जाएगा -2d, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, d हो गया 5 -10, d हो गया 5, if the d is 5, d मिला 5, right? Why you might be thinking, sir, how it is minus? See, इट इज -20 बिकॉज ये बड़ा है ना, तो बड़ा माइनस रहेगा, यहाँ पर भी तो बड़ा है, तो ये पर माइनस, यहाँ पर माइनस कैंसिल होगा, d equals to 5. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वी हैव टू टेक इट आउट द फर्स्ट टर्म, इफ d equals to 5, फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना, 5 में 25, राइट? 25 अगर उस तरफ चला गया, 25 12 minus 25 -13, a equals to -13. सी ये वाला 5, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 उस तरफ चला जाएगा, 12 minus 25 -13, a equals to -13. जनरल टर्म है p, जनरल टर्म का p क्या होता है, a plus n minus 1d
What is the A we got? We got A is all about what, minus 13. Minus 13 plus n. What did we get? N. Nothing. N minus 1. D कितना मिला? 5. So minus 13 plus 5n minus 1, which is all about 5n minus 13 plus 5 minus 5. Yes. Which is all about 18 minus 18. 5n minus 18. 5n minus 18 is the answer. Yes. So this is all about the strategy, and I hope the AP is confirmed to you. And if this is confirmed to you, and one more important thing I have left to say, you beautiful student, that please complete all the consents. After completion of the consents, then only you can keep full marks. I am pretty sure you can keep complete full marks if you will complete the concept, because question consent से चमकेगा, PYQ से चमकेगा, ऐसा ही चमकेगा. The way the questions which I have taken it out now, which I have made you do here, that type of question will only come in exam. That type of question may be direct हो सकता है, नहीं होगा तो that type will be coming. Apart from that, कोई भी, हाँ, people were asking sir word problem. No, बच्चे बहुत है सर word problem तो सैम्पल पेपर में दिया गया, या कहाँ गलत मतलब देते, word problem तो है ही नहीं, reduce ही है, right? It has been reduced and it has been come from by official CISE, तो आएगा कहाँ से? तो you do this type of things, and definitely, and I hope you people can do pretty well than that. So signing off for the today. Do not worry, I will be coming with a one shot.